Okay, friends, can we start? Yes, Rishi. Today, yes, our point is alkene. We have already completed the alkene. Yes, classification of alkene, then their names, molecular formula, and structural formula. Yes, alkene can be classified in two types. And this classification is carried out on the basis of carbon arrangement. If the carbon atoms remain in alkenes are arranged in a linear condition, if the carbon atoms remain in alkenes or remain in linear position, they are known as a non-cyclic alkene. You can observe two terminal in this type of alkenes. And their general formula is CnH2n. जितने कार्बन होंगे इससे हाइड्रोजन डबल होंगे. Second one, in alkene compound, when carbon atoms are arranged, attached to each other and forms a linear chain, when both terminal carbon will attach to each other and form a cycle. This type of alkene compounds are known as a cyclic alkene. Yes, to be alkene, what is the condition to be alkene compound? Minimum one double bond must be present between two carbon atom. More than एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन हम अभी एक ही डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं. यस, नॉन साइक्लिक alkene के बारे में n value from the when we substitute the n value in this general formula, we will get molecular formula, their name and structure formula. Alkene having one carbon is not possible because definition ऐसा बोलता है कि भाई दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए. यहाँ तो एक ही कार्बन है. That's why alkene having one carbon is not possible. Yes, when we n value इसमें 2 लगा था. C2H4. It is alkene having two carbon is known as ethane, but this is the formula of ethene. तो स्ट्रक्चर फार्मूला दो कार्बन के बीच मिनिमम डबल बॉन्ड तो होना ही है. रिमेन बोथ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन रहेंगे. चार बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए दो सेटिस्फाई है. दो वैलेंसी में बी सेटिस्फाई बाय टू हाइड्रोजन. देन दिस इज स्ट्रक्चर. When n value is 3, at that time molecular formula MF will become C3H6. Now देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है. 3 कार्बन 1, 2, 3 कार्बन की चेन. You can put double bond between first and second. Second possibility is second and third. Carbon possesses tetravalency property. To satisfy the tetravalency property, remaining valency must be satisfied by hydrogen. यहाँ CH2, single double bond CH, single bond CH3. यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे. अच्छा, now when n value is 4, at that time MF will be, MF means molecular formula C4H8. So first of all write the 1, 2, 3 and 4 carbon. एक वन डबल बॉन्ड रखना है. बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड भी रख सकते. यस, एक डबल बॉन्ड you can put double bond between first and second possibility between second and third possibility between third and fourth one. You see, जितने वैलेंसी, यहाँ 2 हाइड्रोजन कम है, यहाँ 1 हाइड्रोजन कम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन,
3 hydrogen, 1 hydrogen, 1 hydrogen, 3 hydrogen, 3 hydrogen, 2 hydrogen, 1 hydrogen, 2 hydrogen. ऐसे ही है. Now, when n value is 5, at that time molecular formula will become C5H10. So, first of all, write the 5 carbon atoms in a linear chain 1, 2, 3, 4 and 5. How many possibilities? You can put double bond between first and second. When we put double bond between first and second carbon, this structure will arise. Yes, if double bond present between second and third carbon, this formula structure will arise. When double bond present between third and fourth, then this structure will arise, and finally fourth and fifth, this will arise. In case of C6H12, at that time, how many possible structures are there? डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच रख दो, सेकंड थर्ड के बीच रख दो, थर्ड फोर्थ के बीच, फोर्थ फिफ्थ के बीच, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच. देखो, when number of carbon is 2 at that time, structure possible structure 1, carbon 3 होंगे तो possible structure 2, carbon 4 possible structure 3, carbon 5 possible structure 4. When carbon is 6 at that time, possible structure will be 5. Simply. On other side, cyclic alkene compound. Its general formula is CnH twice and minus 2. Yes, one by one we will put the n value and we will get the molecular formula of cycloalkene. Yes, as per definition, साइकिल बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है. So cycloalkene having 1 and 2 carbon is not possible. 3 से स्टार्ट होगा, C3H4. ये cyclopropene, not propane, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, कहीं भी एक डबल बॉन्ड रख दो. This is CH2, CH और CH. N value 4 होगी. At that time molecular formula will become C4H6. Its name will be cyclobutene. Square draw कर दो. You put double bond between any 2 carbon, successive 2 carbon atoms. This is structure of cyclobutene. When N value is 5, at that time molecular formula will be C5H8. Its name is cyclopentene. पेंटागोनल फिगर ड्रॉ कर दो. कहीं भी डबल बॉन्ड रख दो, एक डबल बॉन्ड. It is known as a cyclopentene. When N value is 6, molecular formula will be C6H10. Cyclohexene. Alkane having 6 carbon is known as hexane, but यहाँ double bond वाला compound है. That's why we can say hexene. Hexagonal figure draw कर दो, कहीं एक डबल बॉन्ड रख दो. यस, तो ये बात हो गई अल्कीन की. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अल्काइन के बारे में. अल्काइन ऑलवेज शोज नॉन साइक्लिक कंपाउंड, नॉट बोथ अल्केन एंड अल्कीन. 2 टाइप के रहते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक. बट अल्कीन हर हमेशा नॉन साइक्लिक होता है और एरिन ऑलवेज साइक्लिक होता है. तो ये बात हो गई. ओके बाबू, ओके, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.